Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm back again with yet another lecture on e-marketing. हम बात कर रहे थे last class में social media marketing की. Yes, that was it. So social media marketing से related discussion को continue करेंगे and we will look at different approaches जिससे हम अपनी social media marketing planning कर सकते हैं. So let's have a look at the objectives for today's lecture. Social media marketing के हवाले से हम बात करेंगे benchmarking and setting goals, strategy outlines, communications and how to implement a social media marketing campaign. उसके ऊपर हम discussion करेंगे. So before I proceed, let's have a quick look at what Burberry is doing right. Burberry ने जो कि एक 160 plus years old brand है, it has started utilizing the technologies in online media for its marketing purposes. और 2009 में उनका एक focus और एक vision ही change हो गया. And they have started including they started including digital marketing technologies. As mentioned by Lisa Manfield in her blog post, source the नीचे slide पे mentioned है. She says that since 2009, the 157-year-old brand has walked the runway straight to digital stardom, ranking number 1 in 2011 and 2012 in Luxury Labs Digital IQ Index for fashion, which evaluates the digital competence of 64 brands based on their site, digital marketing, social media and mobile initiatives. It was also classified in the Genius category alongside Ralph Lauren, Kate Spade and Tory Burch, which tied for third in the rankings, as well as Gucci, Coach and Louis Vuitton. So these are all big names of fashion industry, और इस fashion industry global known names हैं, और इसमें Gucci ने जो एक स्टेप लिया है उसकी वजह से it has been a brand जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं और कस्टमर्स के साथ इनकी engagement बढ़ गई, number of sales increase कर गई हैं. So what's happening right at Gucci और उनका जो owner है, CEO है, उसका जो vision है, उसके बारे में एक वीडियो देखते हैं. We're challenging ourselves constantly to stay ahead of the curve. Be it mobile, be it social, be it physical, they're all one. Life is forever blurred. I grew up in a physical world, and I speak English. The next generation is growing up in a digital world, and they speak social. Whether you're talking with customers or you're talking with employees, you have to do it on a social platform because that's the language they speak. You know, we were one of the first to customize the chatter platform. We called it Burberry Chat. I will tell you, Christopher and I chat to the entire organization once, twice a week. It gives every associate a platform also to talk back to Christopher and I. Most importantly, it has been the greatest uniter of the culture of any platform we've ever put in place. Now that we've worked with Salesforce and we've got this amazing platform in place, what we're starting to do now is really shift it over to the customer experience. Wherever the customer is, as soon as they say something about the Burberry brand, we should be able to hear it. So if you tweet something positive or negative, our teams around the world can pick up on that and can start having dialogue with you in real time. If you're online, you can click to call, you can click to chat. Within 20 seconds, somebody will be in contact with you. That's the ultimate in customer service. That's how we use Buddy Media, Radian6, some of the new platforms that Salesforce has been focusing on. I think what fascinates me as I travel around the world is all of the high growth markets around the world are already mobile first. This enables everyone to be so much smarter about everything. Everything we're doing, it has to come through here first. You know, we had a runway show in London. It was a mobile first show. Anyone in the world could feel as if they had a front row seat and experience everything firsthand, and some things even before it went down the runway. This is the entry into the brand. How do we evolve that retail experience to be just as rich and just as exciting as that experience? We've opened up what we call the store of the future. And we've got a real loyal brand following. So when they walk into the store and they opt in, the fun really begins.
It'll actually feel like you're walking into the website. We'll know what is in their basket online that they've saved, that they loved, or they've shared with their Facebook fans. The sales associate will be able to service them so much quicker. We've got a lot of chip-enabled products. They put on a trench coat, they stand in front of the mirror, they'll see where that coat was made and the craftsmanship. And we've got these magical trays, so they take this iconic handbag and video content comes to life, showing them how that bag was made. It's the first time that a company is blurring the lines between physical and digital. Society is moving so fast. This is how customers live. They wake up with a device in their hand and life begins. And the onus is on us to change everything we do to keep pace with as fast as society is moving. I think Salesforce understands today that it's customer first. They speak social. And everything's coming through this device. That's why I'm very confident that Salesforce is going to be a big part of helping us achieve our vision as we rapidly move forward into the next decade. So as you've seen, Burberry has a vision for digital and social media. As mentioned by the CEO, they wanted to be the first fashion company that is fully digital end-to-end. The experience is that the customer will have total access to Burberry across any device, anywhere. They will get exactly the same feeling of the brand, feeling of the culture, regardless of where, when and how they were accessing it. So for any CEO, this is especially the CEOs who are skeptical today about social enterprise, you have to be totally connected with everyone who touches your brand. If you don't do that, I don't know what your business model is in 5 years. That's what she says. So आपको पता चलता है इससे कि social media की कितनी इम्पोर्टेंस है और कैसे वर्ल्ड नोन बिग ब्रांड्स अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को डिजिटल कर रहे हैं एंड दे रियलाइजिंग कि आजकल के लोगों की बात करने का और कम्युनिकेट करने के जो तरीके चेंज हो रहे हैं, उन चीज़ों को, उन टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है, उनसे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है. So we've already discussed in our last lecture कि social media है क्या. It is the use of internet and mobile channels जो कि allow कर रहे हैं interaction और users के जो है आपस में engagement और participation और organization के साथ जो उनकी engagement और interaction है उसको increase करने में help करता है. कस्टमर का साथ जो इंटरेक्शन है उसको फिर मॉनिटर करने की भी ज़रूरत है. एज वी हैड मेंशन्ड इन द लास्ट लेक्चर एज वेल कि जब हम कस्टमर्स जो कि सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं टू इंटरैक्ट विद अदर्स, तो हम उनको या उनके साथ इंटरेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं. तो हमें एक पॉजिटिव इंगेजमेंट की ज़रूरत है इन अ वे जिसमें कस्टमर्स को इंटरफेरेंस फील ना हो, डिसरप्शन फील ना हो. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड this radar in our last lecture as well, which is known as social media marketing radar. और ये smart insights के ऊपर smartinsights.com के ऊपर अवेलेबल भी है. इस रेडार में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो कंपनी की साइट है which is at the core of this radar, उसके पास कुछ फर्स्ट लेवल के ऊपर रेडार के अंदर कुछ क्लोजली कनेक्टेड सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं और फिर जैसे जैसे रेडार की एक्सपेंशन होती चली जाती है तो हमारे पास ज़्यादा सोशल मीडिया बेस्ड नेटवर्क्स और सोशल मीडिया बेस्ड प्लेटफॉर्म्स वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे मे भी ज़्यादा नीश कम्युनिटीज़ फॉर्म करने में हमें वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं. We've also seen this little table yesterday जिसमें हमने different types of social networking को mention किया था. आप इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं to identify कुछ gaps को और ये help कर सकता है आपको
चॉइस ऑफ सोशल नेटवर्किंग के अंदर भी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी जो है उसको मेंशन करें और साथ इम्पोर्टेंस टू योर ऑर्गेनाइजेशन उसको मेंशन करते जाएं इस टेबल के अंदर, और ये आपको फिर हेल्प कर सकता है इन प्लानिंग एंड मेकिंग बेटर डिसीजंस कि आपके पास कौन से टाइप्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग जो है वो आपको ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं. Let's take another example of how you can engage your audience through their interests as part of an integrated campaign. Princess Cruises uses a classic blog to win or share to win campaign, asking readers about their favorite travel destination. Campaign जो है उसने users को engage किया है by identifying their interests in travel destinations, और फिर Facebook को यूज़ किया at the heart of this, और कैंपेन को encourage किया, participation को encourage किया through seeding using other digital marketing channels like blogs and emails. So competition उन्होंने Facebook पे रन किया, लेकिन बाकी channels को भी फिर यूज़ करके लोगों को Facebook तक पहुंचाया जहां पर उनका कंपटीशन रन हो रहा था. सो इस किस्म की चीज़ें, और देयर आर अदर एग्जांपल्स जिसमें ऑफलाइन मीडिया को यूज़ किया जाता है. आपके पास बैनर्स यूज़ होते हैं जो जगह पे डिस्प्लेड है या स्टैंडीज लगाई जाती हैं, और वहाँ से लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो डिजिटल मीडिया के ऊपर जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन की किसी सोशल मार्केटिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें. सो एंगेजमेंट कस्टमर्स के साथ या ऑडियंस के साथ इंक्रीज करने का एडिशनल तरीका बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है. सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी जो है उसको समझने के लिए या बनाने के लिए इट इज़ यूजफुल टू कंसिडर पोस्ट. पोस्ट इज़ अ फ्रेमवर्क जो कि फॉरेस्टर कंपनी ने दिया था, 2007 के अंदर बना था. और इस पोस्ट फ्रेमवर्क में पोस्ट स्टैंड्स फॉर, इट इज़ एन एक्रोनिम, इट स्टैंड्स फॉर पीपल, ऑब्जेक्टिव्स, strategy and technology. By people we mean that we need to understand the adoption of social media by an audience and understand that it is an essential starting point. ऑफ कोर्स जब हम रिव्यू करते हैं कि कंपैटिटर्स और इंटरमीडियरीज जैसे पब्लिशर्स हैं या कंपैरिजन साइट्स हैं वो सोशल मीडिया को कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी हमारा सिचुएशन एनालिसिस का ही पार्ट बन जाता है. सो हम सोशल मीडिया की अडॉप्शन जो है वो डिफरेंट ऑडियंस जो आपकी है उसको अंडरस्टैंड करते हैं इस फ्रेमवर्क में. यानी ऑल दोज पीपल जो आपके कंज्यूमर्स या कस्टमर्स या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स भी हो सकते हैं, और उसके अलावा बाकी डिफरेंट बिजनेसेस या कंपैटिटर्स और इंटरमीडियरीज जो कि आपकी सोशल प्रेजेंस को मॉनिटर कर रहे होंगे या आपके ब्लॉग्स को या आपके पेजेस को भी फॉलो कर रहे होंगे, तो उनकी बारे में भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़रूरी है. The next is objectives, जो कि social media strategy में we have to set objectives for different options to engage customers. यानी हमारे पास customers एक life cycle, customers का एक life cycle होता है जिसमें 3 stages होती हैं: acquisition, retention या development of relationship, and then win back. So customers जो हैं वो इन 3 stages में lie कर रहे होते हैं, और हम अपनी जो promotions हैं या campaigns हैं उनको personalize कर सकते हैं based on where customers are in the life cycle. So हम इस life cycle को customers के understand करते हुए अपने लिए objectives set कर सकते हैं कि जैसे आपने अगर तो नए customers acquire करने हैं ना, या फिर Facebook के ऊपर नए likes acquire करने हैं और users आपके पेज को like करें. If you have 9,500 likes already and you are trying to meet a target of having 10,000 likes on a Facebook page, तो फिर आप एक competition run कर सकते हैं कि whoever will be the 10,000th user हम उसको प्राइज देंगे. So
एक्विजिशन जो है वो यहाँ पर गोल था. इसके अलावा कन्वर्जन हो सकती है, यानी आपके पास जो लाइक्स हैं वो कोई एक्शन लें, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें या रिटेन्ड रहें, इस तरह से आपके कस्टमर्स रिटेन्ड रहें, आपसे दोबारा परचेज कर सकें. सो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जा सकते हैं. एंड अगेन जॉश बर्नॉफ ऑफ फॉरेस्टर रिकमेंड्स कि यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ऑब्जेक्टिव बिफोर you decide on a technology, then figure out how you will measure it. So that is how you should make a strategy. ये नहीं कि पहले टेक्नोलॉजी देख ली और फिर बाद में देखा कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद कि ये तो फायदेमंद ही नहीं थी. No, look at the options, make a strategy and then implement it. The next point is strategy. How to achieve your goals? Burnoff suggests कि आप सोशल मीडिया, क्योंकि एक डिसरप्टिव अप्रोच है, तो आपको ये इमेजिन करना चाहिए कि जब आप उसको यूज़ करेंगे तो हाउ विल इट सपोर्ट द चेंज दैट यू विल ब्रिंग इन. इमेजिन यू सक्सीड and how will things be different afterwards. Imagine the end point first and then you will know where to begin. So एक strategy बनाने की ज़रूरत है. Look at the end and then find out means कि वहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है using social media. And finally, the last one, technology. Decide on the best social media platforms to achieve your goals after you have made a strategy, after you know what your objectives are and after you know who is the audience. Audience को देखते हुए फिर हम choose कर सकते हैं. यहाँ पर रेडार जो हमने पहले पढ़ा है सोशल मीडिया के बारे में, उस रेडार को सामने रखते हुए अपने लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म्स चूज कर सकते हैं. या आप अगर मार्केटर्स हैं और आपका क्लाइंट है जिसको आप कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हैविंग सोशल मीडिया, तो आप उस रेडार को देखते हुए, उस क्लाइंट के प्रोफाइल को देखते हुए प्लेटफॉर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जो कि बहुत नीश एरिया में काम कर रहा है, तो फिर आपको उस नीश एरिया से रिलेटेड सोशल प्लेटफॉर्म्स ढूंढ के देने पड़ेंगे. बिजनेसेस के लिए आप डायरेक्टरीज में सर्च करते हैं और वहाँ पे ब्लॉग्स जो रन हो रहे होते हैं, जो इंटरमीडियरीज रन कर रही हैं अबाउट डिफरेंट बिजनेसेस या बिजनेस स्ट्रैटेजीज, वहाँ पर उनको हेल्प किया जा सकता है कि उनकी प्रेजेंस बन सके. या जैसे मैंने कल मेंशन किया था, लास्ट क्लास में मेंशन हुआ था कि इंजीनियर या मेडिकल फील्ड से जो रिलेटेड लोग हैं, उनकी अपनी कुछ डिस्कशन बेस्ड साइट्स हैं या उनकी अपनी सोशल प्लेटफॉर्म्स बेस्ड साइट्स हैं, तो वहाँ पर उनको हेल्प किया जा सकता है. सो टेक्नोलॉजी जो है आपने डिसाइड करनी है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी एंड द ऑडियंस. Then, when you're setting your goals, you need to benchmark and then set your goals. Benchmark your current social media marketing performance. अभी existing situation क्या है, अभी कौन से प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसको पहले बेंचमार्क करें, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशंस के पास ऑलरेडी किसी ना किसी तरह की ऑनलाइन प्रेजेंस होती है जहां पर कस्टमर्स उनके ब्रांड को डिस्कस कर रहे होते हैं या उनके रिलेटेड इंटरेस्ट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं. इससे ये भी मतलब है कि आप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को क्रिएट करते हैं और ये आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर वी डिलीवरिंग नाउ, यानी अभी कौन से सोशल मीडिया नेटवर्क्स को या सोशल मीडिया मार्केटिंग को हम यूज़ कर रहे हैं. वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपको फ्यूचर गोल्स सेट करने के लिए. The next step is that you need to review your current commercial contribution from social media. आप अपनी स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं बाय फाइंडिंग आउट कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और अभी करंट सिचुएशन में सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को क्या डिलीवर करके दे रहा है अगेंस्ट द कमर्शियल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कैसे अगर कोई सेल्स इंक्रीज हुई हैं, जैसे बर्बरी के केस में था कि जब उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट किया अपने पास तो उनकी सेल्स में मोर देन 25% इंक्रीज हुआ वर्ल्ड वाइड. तो क्या आपकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के कमर्शियल गोल्स को
ہیلپ کر رہی ہے یا سپورٹ کر رہی ہے. اس طرح سے آپ نے کمرشل کنٹریبیوشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. ریمبر اٹس ویری ایزی ٹو لاگ ان اینڈ کریٹ a platform for an organization, but it takes a lot more than just having a platform and not utilizing it in an effective way and not having an objective for that. Objectives کا ہونا بھی ضروری ہے, strategies کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنی چوائس کو بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں ریگارڈنگ دا سوشل میڈیا. It does not always work کہ آپ نے ایک presence بنائی and that presence starts paying you off. While you're benchmarking and setting your goals, آپ کو it works out better اگر آپ ایک broader goals کے ساتھ یا wider goals کے ساتھ start کریں اور پھر drill down کریں specific objectives بنانے کے لیے. Once you have your defined broad goals, تو پھر آپ کے لیے انالیسز کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ اسپیسیفک گولز سیٹ کر سکیں. اور اسپیسیفک گولز اگر اسمارٹ گولز ہوں گے, I'm sure آپ کو اسمارٹ گولز کا پتہ ہے, اسمارٹ اسٹینڈ فار اسپیسیفک, میجریبل, ایکشنیبل, ریئلسٹک اینڈ ٹائملی گولز. ایسے گولز جو کہ میجریبل ہیں, جو کہ ایک ٹائم باؤنڈ ہیں, ٹائم کے اندر ہو سکتے ہیں, ریئلسٹک ہیں, کیے جا سکتے ہیں, ان کی پرفارمنس کو میجر کیا جا سکتا ہے, اور وہ بہت اسپیسیفک گولز ہیں. ایسے گولز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے ود ریفرنس ٹو سوشل میڈیا اور اس کا پرپز, اور وہ کیسے بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اچیو ہو پائیں گے. اگر آپ کی جو یوسیج ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کی, اگر ابھی اسٹیبلش نہیں بھی ہوئی بھی, تب بھی آپ کو اسمارٹ گولز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لک ایٹ دا براڈر پکچر, سیٹ یور گولز اینڈ دین اسٹارٹ ڈرلنگ ڈاؤن ٹو سیٹ اسپیسیفک آبجیکٹیوز. براڈر گول فار ایگزامپل کوڈ بی کہ آپ نے اکراس ڈفرینٹ سوشل نیٹ ورکس اپنے برانڈ کے نام کو کریٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی برانڈ نیم اویئرنیس ہو اور آپ کے یوزرز کو آپ کے پروڈکٹس کا یا اور ٹارگٹ آڈینس کو پروڈکٹس کا پتہ چل سکے. سو فار دیٹ پرپز آپ کی جو اسٹریٹجیز ہوں گی وہ پھر اسپیسیفک گولز کی فارم میں آ جائیں گی. مے بی یو ول اسٹارٹ ود اسپیسیفک پلیٹ فارم جیسے کہ فیس بک ہے, پھر آپ کچھ ٹائم کے بعد دس کوڈ بی ون آبجیکٹیو, اور فیس بک کے اوپر آپ نے ایک اسپیسیفائڈ نمبر آف یوزرس کو لے کر آنا ہے, تو آپ اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں, اس کو میٹ کرنے کے لیے کوئی کمپٹیشن ڈیزائن کر لیتے ہیں یا کوئی آفر یا کوپنس کا بیس سسٹم بنا لیتے ہیں. سو اس طرح سے آپ کے پاس آڈینس آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر کچھ ٹائم کے بعد ایک آپ کا دوسرا آبجیکٹیو ہو جاتا ہے کہ جی آفٹر یو ہیو ریسیوڈ اے سرٹن اماؤنٹ آف یوزرس یا نمبر آف یوزرز آن فیس بک, اس کے بعد آپ ٹویٹر کی طرف جا سکتے ہیں, یا اس کے بعد آپ کوئی اسپیسیفک نیش پلیٹ فارم پہ جا سکتے ہیں, یا پھر آپ کا سیکنڈ اسٹیج یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بلاگ اسٹارٹ کر لیں, اپنے بزنس بلاگ اسٹارٹ کر لیں, اور پھر بزنس بلاگ کے اوپر آپ کے کالمسٹس ہوں, وہ آرٹیکلس لکھیں. آرٹیکلس جو ہیں پھر وہ آپ کے فیس بک پیجز پہ بھی شیئر کیے جا سکتے ہیں. تو انٹیگریٹڈ کمیونیکیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس طرح سے پھر آپ اپنے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں. اسٹارٹ تھنکنگ آف اے براڈر پکچر, اور پھر فردر ڈاؤن 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 آپ اپنے لیے اسمالر اور اسمارٹ گولس سیٹ کر سکتے ہیں. So while you're setting benchmarking and setting goals, آپ اپنے لیے جو آپ کی بزنس اپرچونٹی ہے اس کو کنسیڈر کریں, اور پھر سوشل میڈیا جو کنٹریبیوشنس کرے گا ٹورڈز مارکیٹنگ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اینالائز کریں. آپ کے پاس سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے ایک فوکس ہونا چاہیے. Do you want to see it as a primary customer service channel جہاں پر لوگ کسٹمر سروسز ریلیٹڈ آپ کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں, یا you want to use it for increasing conversions related to leads and sales, or a way of increasing loyalty. آپ کا پرپز کیا ہے؟ ایک ہے یا اس سے زیادہ ہے, اور یہ سارے ہیں, یا آپ کا برانڈ اویئرنیس پرپز ہے. آپ نے آپ کی جو مارکیٹنگ ایکٹیویٹی ہے اس سے ریلیٹڈ اسپیسیفک فوکسڈ گولز اپنے لیے
आइडेंटिफाई करने हैं. सोशल मीडिया कैन डिलीवर ऑल दीज बट नॉट फ्रॉम अ स्टैंडिंग स्टार्ट. आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है. You have to decide which are more important for you initially and then adjust your resources accordingly. Of course, जब ये सारे काम करने हैं तो आपको human resource भी चाहिए, आपको resources in the terms of technology भी चाहिए, आपको बजट्स भी चाहिए मार्केटिंग करने के लिए. सो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको अपने लिए फोकस पहले आइडेंटिफाई करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग करनी है. वी हैव 5 S's फॉर गोल सेटिंग जो कि ई मार्केटिंग में भी यूज़ किए जाते हैं और सोशल मीडिया के लिए भी यूज़ किए जाएंगे. हमारे पर्पस क्या है? द फर्स्ट वन इज़ सेट सेल गोल्स. सेट सेल गोल्स का मतलब क्या है कि आपने क्या अपना जो काम करना है वो सेल्स इंक्रीज करने के लिए करना है. सो सोशल मीडिया चैनल्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं सेल्स एंड परचेज इंटेंट को, जिससे लीड जनरेट होती हैं और सेल्स जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगहों के ऊपर इंक्रीज हो जाती हैं. Set goals are best defined through a SMART Insights RACE framework जो कि पॉल स्मिथ और डेव चैफी की बुक में भी मौजूद है और ये कवर करता है कस्टमर के सारे कॉन्टेक्ट पॉइंट्स को थ्रू द कस्टमर लाइफ साइकिल. सो द फर्स्ट वन इज रीच. यू यूज सोशल मीडिया टू रीच न्यू प्रॉस्पेक्ट्स through amplification such as shared mentions in social media streams and advertising within the social media. So the first is how would you reach social media ताकि prospects को जो है वो आप नए prospects तक पहुंच सकें. Then act. एक्ट के यानी रेस फ्रेमवर्क में जो एक्ट का कंपोनेंट है दैट मीन्स दैट यू यूज सोशल कंटेंट और वेबसाइट्स एंड सोशल आउटपोस्ट्स टू encourage interaction leading to increased sales. Next one is convert. You increase conversion to sale through moving customers from interaction with our brand to purchase. यानी सिर्फ लोग आपके ब्रांड के बारे में बात ना करें, वो परचेज भी करें. एंड द लास्ट वन इज इंगेज. Encourage our existing customers to act as advocates for our business through sharing and recommendations. So as you can see कि ये रेस फ्रेमवर्क जो है ये हेल्प कर सकता है हमें अपने लिए जो सेल गोल्स हैं वो सेट करने के लिए कि हम सेल्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. We reach out to prospects यानी हम नए कस्टमर्स एक्वायर करना चाहते हैं. हम एक्ट का वर्ड यूज करते हैं जिससे इंटरैक्शन इनकरेज होता है, जिससे सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं, लीड्स इंक्रीज हो जाती हैं. वी कन्वर्ट यानी सेल्स जो है वो लीड्स जो है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं इसमें. और इंगेज, वी इंगेज विद एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ताकि वो आपके बारे में पॉजिटिव मैसेजेस दें और ब्रांड एडवोकेट्स बन सकें. सो दिस इज द फर्स्ट एस जो कि सेल एस है. और सेल एस को समझने के लिए यानी सेल गोल्स को समझने के लिए हम रेस फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं. द सेकेंड एस इज स्पीक गोल्स. स्पीक गोल्स का मतलब क्या है कि यू इनकरेज ऑनगोइंग एंगेजमेंट. This should come before company messages so that the sell, inform, entertain balance is right. हम encourage करते हैं जो कस्टमर्स के साथ या प्रोस्पेक्ट्स के साथ engagement हो रहा है उसको. ब्रांड परसेप्शंस को कम्युनिकेट किया जा सकता है. अपडेट्स जो ब्रांड्स में नए प्रोडक्ट्स में सर्विसेज में हो रही हैं उनको कम्युनिकेट किया जा सकता है. ये गोल्स बन सकते हैं हमारे लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर. encouraging dialogue to find out more about products and then repetition, monitoring and management. तो ये हमारे communication से related goals हैं, यानी speak goals हैं. The second S for goals in social media. The third one is
set serve goals. Serve goals کا کیا مطلب ہے کہ ہم کسٹمر سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیا انفارمیشن یا کسٹمرز کی کوئریز کو ریزالو کرنے کے لیے سوشل پلیٹ فارمز کو یوز کیا جا سکتا ہے. The second way or second goal related to serve goals could be کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کسٹمرز کے جو ایشوز ڈسکس کیے جا رہے ہیں ان کو اور ریزالو کر سکیں, اور ٹو انکریج ویب سیلف سروس انکلوڈنگ کولیبوریٹیو سیلف سروس. مطلب یہ کہ جو ایف اے کیوز ہیں یا آٹو رسپونڈرز ہیں, ہیلپ سیکشنز ہیں, وہ بنائے جا سکتے ہیں جہاں پہ کسٹمرز جو ہیں وہ اپنی کوئریز دیں اور کوئریز کے اگینسٹ جو ہیں ہمیں آٹومیٹڈ ان کو سیلف سروس کی طرح کسٹمر سروس پرووائڈ کی جا سکے. تو تھرڈ ایس save goals, یعنی cost savings are a less relevant part of the 5 S's since managing social media has incremental costs for which budget will need to be found from elsewhere. But it's as well that this issue of budget reallocation is considered here. جو save goal ہے یہ تھوڑا سا less relevant ہے, لیکن obviously cost saving تو organizations کو ہر وقت ہی فکر ہوتی ہے, اور سوشل میڈیا کے اوپر جو کاسٹ ہے وہ انکریمنٹل ہے, اس کے بجٹس ہمیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں. وی ہیو ٹو جسٹیفائی, ہمیں تھوڑا سا کاسٹ سیونگ کا بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. دا لاسٹ ون از سیٹ سیزل گولس. سیزل these are closely related to speak goals. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے گولس ہیں جو کہ ہیلپ کرتے ہیں how to add value to customers through social media. So these are the 5 S's جو کہ یوز کیے جا سکتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے. جب ہم اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے جب ہم اپنے لیے گول سیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ 5 طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہیلپ کر سکتی ہیں کہ ہم کس ٹائپ کے گولز سیٹ کریں. If you want to prioritize social media marketing goals, تو ہم اس طرح کا ایک ٹیبل بنا سکتے ہیں. And I have here 16 different things listed جو کہ آگے آئیڈینٹیفائی بھی کر رہی ہیں کہ یہ کس کیٹیگری آف گول سے ریلیٹ کر رہے ہیں. اینڈ یو کین رینک ایچ اور اسکور ایچ آف دیز گولس, اور اس حساب سے پھر جو آپ کو ہائیسٹ اسکورس ملتے ہیں وہ آپ کی مے بی پرائرٹیز بن جاتی ہیں, اور پھر لیسر جو گولس ہیں وہ لیسر امپورٹنٹ پرائرٹیز بن جاتی ہیں. فیو آف دیز گولس کوڈ بی امپروو لیڈس تھرو انکریزڈ ریچ, امپروو سیلز, کمیونیکیٹ پروڈکٹ اینڈ آفر انفارمیشن, گین کسٹمر فیڈ بیک. یہ طرح طرح کے گولز ہیں جو کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور ان کے آگے ان کو رینک اور اسکور کر سکتے ہیں. اور پھر ہر ٹائپ کا گول جو ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے کہ یہ سیل گول ہے, یہ اسپیک گول ہے, یہ سروس گول ہے, یا یہ سیزل گول ہے. ہمارے پاس ایک KPI پیرامڈ ہے, کی پرفارمنس. ہمارے پاس ایک پیرامڈ ہے جو کہ KPI پیرامڈ ہے given by Altimeter, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں, اور یہ ہیلپ کر سکتا ہے ہمیں سیٹنگ آبجیکٹیوز کے لیے بھی. ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے سوشل میڈیا ریٹرن آن انویسٹمنٹ پیرامڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے. ایک بہت ہیلپ فل پیرامڈ ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ ٹائپس آف آبجیکٹیوز کو سیٹ کرنے کے لیے ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے. اس میں جو ہے وہ کلاسیکل اپروچ جو ہم بزنسز میں یوز کرتے ہیں یا اسٹریٹجک میجرز میں یوز کرتے ہیں, ٹاپ آف دا پیرامڈ کے اوپر جو ہے سینئر مینیجر ہے, اور آپریشنل میجرز جو ہیں وہ بیس آف پیرامڈ کے اوپر ہیں جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں. اس پیرامڈ میں ایز یو کین سی ہیئر بیس کے اوپر جو آپریشنل ایکٹیویٹیز ہیں دے آر انگیجمنٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز, جیسے نمبر آف کلکس کتنے ہیں, فینس کتنے ہیں, فالوورز کتنے ہیں, کوئی ایک آپ نے اگر میسج کمیونیکیٹ کیا ہے تو اس میسج کے ویوز کتنے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریلیٹڈ ہیں انگیجمنٹ ڈیٹا سے. سو یہ بیس پہ ہیں اس آپریشنز ریلیٹڈ بیس میں جو کہ سوشل میڈیا کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ ریلیٹڈ پیرامڈ ہے. اور اس میں جو لوگ انوالوڈ ہیں, جو رولز انوالوڈ ہیں, دے آر کمیونٹی مینیجرز اینڈ ایجنسیز. سیکنڈ لیول کے اوپر ہمارے پاس سوشل میڈیا انالیٹکس آ جاتا ہے. سوشل میڈیا انالیٹکس میں وی میجر اسپیسیفک جو ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں ڈیٹا سے ریلیٹڈ. وی لک ایٹ شیئر آف وائس,
ریزونیشن, سپورٹ رسپانس, انسائٹس, یہ ساری چیزیں جو ہیں سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں. پیج انسائٹس جیسے ہوتی ہیں, یا سپورٹ رسپانس کسی ایک پوسٹ پہ کیا ملا ہے, یا کسی بلاگ کی انٹری کے اوپر کیا ملا ہے. یہاں پہ جو رولز پلے کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ بزنس اسٹیک ہولڈرز کا رول ہوتا ہے. اور اس سے بالکل اوپر ٹاپ کے اوپر جو میٹرکس یوز کیے جاتے ہیں وہ بزنس ریلیٹڈ میٹرکس ہیں, جیسے کہ ریونیو, ریپوٹیشن, آپ کی آن لائن جو ہے وہ ریپوٹیشن, اس کو, اور ان کو میجر کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ایٹ دا ٹاپ آف دا پیرامڈ, بیکاز یہ زیادہ اسٹریٹجک لیول کے میجرس ہیں. اور آبویسلی ٹاپ مینجمنٹ, ایگزیکٹوز, جو کیمپینز کے لیڈز ہیں, وہ اس کو, ان میٹرکس کو زیادہ یوز کر سکتے ہیں. After we have set the objectives of social media for our organization, اور مارکیٹنگ کے لیے جو اسمارٹ آبجیکٹیوز ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے وہ سیٹ کر لیے, اور لیول آئیڈینٹیفائی اگر کر لیا کہ جی زیادہ کسٹمر انگیجمنٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں, یا زیادہ جو ہے وہ آپ کا آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ریلیٹ کر رہے ہیں کسی بھی 5 ایسز میں سے, کسی بھی ایس سے. آفٹر وی ہیو ڈن دیٹ, وی وانٹ ٹو ریویو دا ڈیمانڈ اینڈ انگیجمنٹ فار سوشل میڈیا مارکیٹنگ. اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ کتنا پرپورشن ہے ہمارے سوشل میڈیا پارٹیسپیٹرز کا, جو کہ ہماری ٹائپ آف آڈینس جو ہے ہماری مارکیٹ میں, ہماری آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ مارکیٹ میں پارٹیسپیٹرز میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ ٹارگٹ آڈینس کے ہو سکتے ہیں. Certain sectors are more relevant to social media participation and sharing. For example, fashion compared to financial services. فائنینشیل سروسز کے اوپر سوشل میڈیا مارکیٹنگ شاید اتنی پاپولر نہ ہو جتنے کی ریٹیل یا فیشن انڈسٹریز سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر ہے. So for consumer demand and engagement, what basically you have to do is you identify the proportion of active social media participants within your audience and markets, اور پھر آپ proportion وہ identify کرتے ہیں audience کا جو کہ involved ہے user generated content میں through commenting and sharing. ہمارے پاس فارسٹر نے پرووائڈ کیے ہیں 2 ٹولز جو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں کہ کیسے ایکٹیو آڈینسز ہیں سوشل میڈیا کے اندر. سو وی ہیو 2 ٹولز, ایک ہے سوشل ٹیکنوگرافکس لیڈر اور دوسرا ہے سوشل میڈیا پروفائل ٹول, جو ہیلپ کرتے ہیں ہمیں کسٹمر ڈیمانڈ اور انگیجمنٹ کو ریویو کرنے کے لیے. Social technographics ladder is used to understand what kind of customers do you have. اور پھر social media profile tool جو ہے وہ help کرتا ہے کہ جو different proportion of audience involvement ہے customers کے حساب سے اس کو measure کرنے میں help کرتا ہے, اور یہ B2B cases میں بھی use کیا جا سکتا ہے. This is the ladder جس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ سٹیجز ہیں, لیڈر کے ڈفرینٹ سیکشنز ہیں, اور ایز یو کین سی وی ہیو ان ایکٹیوز, اسپیکٹیٹرز, جوائنرز, کلیکٹرز, کریٹیکس, کنورسیشنلسٹس اینڈ کریٹرز. Inactives are those people who are none of the above, یعنی جن کی کوئی بھی آپ کے سوشل پلیٹ فارم کے اوپر انگیجمنٹ نہیں ہے. Spectators are those who read your stuff, who read your blogs, جو کہ آپ کے کانٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ویڈیوز واچ کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, یہ آن لائن فورمز نظر آتے ہیں, ٹویٹس میں. So social media ladder میں as you can see right here, there are different types of people. There are people who are inactive, یعنی وہ کہیں کسی engagement activity میں involved نہیں ہیں. Then you have spectators. Spectators are those people جو کہ آپ کے content کو پڑھ رہے ہیں, videos watch کر رہے ہیں, content کو سن رہے ہیں, online forums میں, tweets میں, blogs میں یہ content کو read کر رہے ہیں یعنی watch کر رہے ہیں, اور these are known as spectators. Then we have joiners جو کہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کے اوپر ایک پروفائل کو مینٹین کرتے ہیں اور سمپل سوشل نیٹ ورک سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں. دین وی ہیو کلیکٹرز جو کہ
न्यूज़ फीड्स को, RSS फीड्स को यूज़ करते हैं, वेब पेजेस के ऊपर टैग्स लगाते हैं और वेबसाइट्स के को वोटिंग करते हैं इनके बारे में. These are all collectors. Then we have critiques. Critiques are those who post ratings या किसी और के ब्लॉग के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑनलाइन फोरम्स में, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. Then we have conversationalists. ये ऐसे लोग हैं जो कि स्टेटस अपडेट कर रहे हैं सोशल नेटवर्क से साइट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अपडेट्स पोस्ट कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं. एंड देन टॉप के ऊपर हैं क्रिएटर्स, वो लोग जो कि ब्लॉग पे पब्लिश करते हैं, वेब पेजेस पे लिखते हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं. एंड वी हैव टू थिंक of how we can activate each type of a person. Creators के लिए हमें encourage करना पड़ता है कि वो feature करें हमारी organization को in their blogs और contribute करें हमारी sites के ऊपर और उस content को फिर share करें. So इस technographics ladder को देखते हुए you have to think that how can you activate each type of a person. आप content creators जो हैं उनको encourage करते हैं कि वेबसाइट्स के ऊपर आपके बारे में लिखें, कंट्रीब्यूट करें आपकी साइट के ऊपर. कन्वर्सेशनलिस्ट को encourage किया जा सकता है that they start sharing your content या आपके बारे में अपडेट्स लगाएं. क्रिटिक्स को encourage किया जाए कि वो डिस्कशन करें आपकी ब्लॉग के ऊपर या आपकी सोशल पोस्ट्स के ऊपर. देन कलेक्टर्स कैन बी requested or they can share your content through social sharing. Joiners जो हैं they can start to share your content through social sharing. Spectators उनको encourage करना चाहिए कि वो joiners या collectors बन जाएं. और फिर inactives उनको भी encourage किया जा सकता है कि they can either become spectators or when you are communicating with them offline तो उनको हम encourage कर सकते हैं कि वो online आएं और आपके pages को और आपके social content को follow करें और वहाँ पे subscribe करें और like करें. So इस तरह से हम इस सोशल टेक्नोग्राफिक्स लैडर को यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा सोशल प्रोफाइल टूल जो है उसको यूज़ किया जा सकता है टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द ऑडियंस या उनके डेमोग्राफिक्स को देखने के लिए. और इसके लिए जो हमारे पास सोशल मीडिया एनालिटिक्स के पेजेस हैं या वेब एनालिटिक्स के टूल्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें जनरल रिपोर्ट्स देते हैं अबाउट सर्टेन वेब पेजेस और उनके ऊपर ट्रैफिक से रिलेटेड या यूजर्स के प्रोफाइल से रिलेटेड. और वो भी हमें हेल्प कर सकता है इन आइडेंटिफाइंग engagement related activities with our users. In profiles ke analysis mein we can get details about how many of the visitors or the audience is male versus how many is female. Age groups पता चल सकते हैं, locations पता चल सकती हैं. तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप अपने लिए फिर engagement के तरीके customers के साथ identify कर सकते हैं. Once we are done with that, then we'll go towards benchmark competitors use of social media. हम एक simple scorecard बना सकते हैं जहाँ पर हम लिख सकें या measure कर सकें और mention कर सकें कि competitors जितने हैं वो किस तरह से social media को use कर रहे हैं. Then we can use reach and influence KPIs as well. Reach and influence key performance indicators जिसमें हम share of voice की बात करते हैं, यानी number of people discussing brand and category keywords in social media. हम उसको calculate कर सकते हैं. We can also find out about sentiments, that is discussion polarity percent. How many are speaking positively about a brand. ये चीज़ें calculate की जा सकती हैं. So while we are benchmarking for competitors' use of social media, we can identify some engagement KPIs. Network size and growth, which is the obvious one, the numbers of fans or followers of main social networks. Number 2, social sharing, degree to which content is shared through the network, यानी retweets और shares, likes, social networks के ऊपर क्या है
اس کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. اینڈ دین پرسنٹیج انگیجمنٹ جو کہ یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ آن سائٹ جو یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ ہے اس کے اوپر پرسنٹیج انگیجمنٹ کتنی ہے, دوز ہو آر the total visitors as compared to those who are engaged in certain activity on social platform. جیسے blog میں آپ کے out of the total visitors how many visitors are part of blogs اور blogs کو follow کر رہے ہیں. So یہ engagement related KPIs ہم identify کر سکتے ہیں. So یہ تو تھی discussion related to objectives and how to look at different key performance indicators, benchmarking سے related. We have to be very careful and we should know, okay, we cannot just dive in to social media by setting up a presence on Facebook or Twitter. بلکہ اس کے علاوہ ہمیں یا اس کے بجائے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم کسٹمرز کی کنورسیشنز کو سنیں, ہم یہ دیکھیں کہ کسٹمرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کو یوز کیسے کر رہے ہیں, کمپیٹیٹرز سوشل میڈیا کو یوز کیسے کر رہے ہیں, پھر ہم اپنے بزنس ایمز کو ریویو کریں اور پھر ہم اپنے لیے جو ہے وہ کیئرفلی سوچنے کے بعد بائی یوزنگ دا سپورٹ آف 5 S's اپنے لیے گولز سیٹ کریں اور بینچ مارکنگ کر کے اپنے لیے بہتر طریقہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. آفٹر وی ہیو ڈن دیٹ وی ہیو ٹو کریٹ اے اسٹریٹجی اینڈ پلان. ہمیں کور سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کو مینیج کیسے کرنا ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے, اور ہمارے پاس اس کے لیے 6 ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ اسٹریٹجی اور پلاننگ میں ہیلپ کرتی ہیں. اینڈ دیز آر دیٹ یو لسن ٹو یور customers and manage your reputation. You transform the brand through social media just like Burberry has done. You acquire new customers, increase sales to existing customers, deliver customer service, and harness insights to develop the brand using social media optimization. یہ 6 کور ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ہمیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں کرنی چاہیے, جو کہ ہمیں اسٹریٹجی اور پلان کریٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. اور یہ 6 کی 6 ایکٹیویٹیز جو ہیں دے رن آن اے کنٹینیوس اینڈ کیمپین بیسس, یعنی کنٹینیوسلی بھی یہ رن ہو رہی ہیں اور کیمپین ٹو کیمپین بیسس بھی رن ہو رہی ہیں. اور اینڈ ٹو سپورٹ دیز ایکٹیویٹیز دے ریکوائر بوتھ اے کانٹینٹ اینڈ اے کمیونیکیشن اسٹریٹجی. ہمیں کانٹینٹ ریلیٹڈ اسٹریٹجی بھی چاہیے اور ہمیں کمیونیکیشن ریلیٹڈ اسٹریٹجی بھی چاہیے. سو لیٹس ہیو اے کوئک لک ایٹ planning and strategy. The first one was define listening and reputation strategy. آپ کو اس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے, آپ کی آڈینس کیا ہے, کون ہے, کیسے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا شیئر کرتے ہیں, پھر آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہے, آپ کے سوشل میڈیا کے آفیشیل چینلز کیا ہیں اور انٹریکشنز آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ کیا ہے. دین یو ٹاک اباؤٹ یور کمپیٹیٹرس کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کمپیٹیٹرز جو ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو ریویو کریں, اور پھر آن لائن پبلشرز یا دوسری جو انٹرمیڈیریز ہیں وہ آپ کے ایک فارم آف کمپیٹیٹرز ہیں, اینڈ دے کین بیکم امپورٹنٹ انفلوئنسرز ایز ویل. سو ان کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے. So you're basically listening, and listening is listening. After listening, what you have to do is you have to develop an approach on how to follow up for positive and negative mentions. یعنی صرف سننا نہیں ہے, اس کے بعد positive اور negative mentions کیا ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بات کرنی ہے یا اس کو دیکھنا ہے. So reputation management کے بارے میں آپ کو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے. The second activity related to planning and strategy is transforming the brand. You set scope for social media activities. آپ انڈرسٹینڈ کریں جو آپ کا انٹرسیکشن ہے of social media with your business's activities. It is not about Facebook, it is not about Google Plus, Twitter or LinkedIn present. It cuts across all customer marketing activities. So آپ نے اپنے لیے scope set کرنا ہے. دین جو آپ کی اسٹریٹجی اور پلان کا حصہ ہے
when you're talking about transforming the brand, review social media capabilities and priorities. कैसे social media आपके लिए brand को transform करने में help करता है. Again, think of Burberry's example, और उस हिसाब से उस example को ذہن में रखते हुए ये understand करना बेहतर है. The next one is governance. You define who is responsible for social media. We have seen that exploiting social media requires the involvement of many people in large companies. एक पेज को ही सिंपल एक पेज को जो सोशल मीडिया पेज है उसको रन करना ही बहुत टाइम कंज्यूमिंग और डॉन्टिंग टास्क हो सकता है, एंड यू हैव टू हैव डेडिकेटेड पीपल जो कि इसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से मैनेज कर सकते हैं. और जब आप एक से ज़्यादा बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने की, तो आपको ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है. इसीलिए फिर पेजेस के ऊपर मॉडरेटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स, कंटेंट राइटर्स ज़्यादा डाल दिए जाते हैं. और ऑर्गेनाइजेशंस में फिर डिजिटल मीडिया को मैनेज करने के लिए पोजीशंस बनाई जा रही हैं, रोल्स बनाए जा रहे हैं, सच एज डिजिटल मीडिया मैनेजर, जो कि हेल्प करता है डिजिटल मीडिया को मैनेज करने के लिए. फिर द लास्ट वन रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग द ब्रांड इज रिव्यूइंग द पर्सनालिटी ऑफ योर ब्रांड एंड सेटिंग अ विजन. सोशल मीडिया एंड कंटेंट मार्केटिंग गिव्स मेनी अपॉर्चुनिटीज, जिससे आपका ब्रांड ज़्यादा एंगेजिंग बन जाता है. So आपकी जो पूरी personality of brand है, that may need to be revisited. So you review that with obviously other people in the organization. और ये सारी strategy का काम है since, तो इसमें जो है वो टीम की involvement होना ज़रूरी है. मार्केटिंग टीम के साथ साथ आपके पास कमिटमेंट सीनियर मैनेजमेंट की भी होना ज़रूरी है. सो जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी बनाने की या ब्रांड को रिव्यू करने के लिए, सो एवरीवन in the organization has to be involved with reference to brand management. जो भी entities हैं उनकी involvement ज़रूरत होती है. लास्ट बात काट दें, ये बात पूरी दोबारा कर रही हूँ. reviewing the personality of your brand and setting a vision. And the last thing about transforming the brand is reviewing the personality of your brand and setting a vision. क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, ज़्यादा इंगेजमेंट हो सकती है कस्टमर्स के साथ. सो वी मे नीड टू रिव्यू द वे द ब्रांड is currently at. यानी जो पूरी पर्सनालिटी है ब्रांड की, that may have to be revisited. जैसे Burberry का केस है, again I'm quoting the same example again and again ताकि चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा clarify हो जाएं. The next activity is related to acquiring new customers. Most marketers सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो सबसे ज़्यादा अपील है वो यही है कि इंक्रीज हो जाएंगी सेल्स, क्योंकि हम ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स तक पहुंच सकेंगे और उनको कन्वर्ट कर सकेंगे कस्टमर्स में. लेकिन ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, और हमें नए कस्टमर्स जो सोशल मीडिया मार्केटिंग से हम जो एक्वायर करते हैं, इट वर्क्स बेस्ट इफ वी अप्लाई ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ रेस फ्रेमवर्क. रेस फ्रेमवर्क भी स्मार्ट इनसाइट्स पे डेव चैफी ने बनाया हुआ है, और इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस जो हैं, नहीं 3 से ज़्यादा हैं, सॉरी. इस फ्रेमवर्क में 4 तरह के क्वेश्चंस जो हैं उनको एड्रेस किया जाता है. रीच, एक्ट, कन्वर्ट एंड एंगेज. हाउ कैन वी यूज सोशल मीडिया टू रीच न्यू प्रॉस्पेक्ट्स? व्हिच अप्रोचेस ऑन आवर वेबसाइट एंड सोशल आउटपोस्ट विल एनकरेज इंटरैक्शन? Convert, how can we convert, we create sales through moving customers from interaction with our brand to purchase? And engage, which marketing activities will encourage our existing customers to act as advocates for our business? ये 4 तरह के क्वेश्चन हम एड्रेस करके अपने लिए फ्रेमवर्क को यूज़ करके सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कस्टमर्स को कैसे और एक्वायर किया जा सकता है. ये जो रेस फ्रेमवर्क का साइकिल है, इसके लिए एक फनल फ्रेमवर्क या एक फनल भी यूज़ की जाती है, ई मार्केटिंग फनल जिसको कहा जा सकता है. और इसमें अगर उस फनल को फर्दर एक्सप्लोर किया जाए तो आपके पास कंटेंट है जो कि अवेलेबल है डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर, एज मेंशन्ड हियर. और फिर इस फनल के हिसाब से आपके पास कस्टमर्स की इंक्वायरीज आ रही हैं, कस्टमर्स के
انکوائریز میں سے آپ پراسپیکٹس کی ایک ڈیٹا بیس بنا لیتے ہیں, ان پراسپیکٹس کے ساتھ انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز پلان کی جا سکتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ فردر ڈاؤن نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں لوگ جو اس ایکٹیویٹی میں آپ کے پاس انٹریکٹ کر رہے ہیں, انگیجڈ ہیں, اور پھر اس میں سے آپ اس ریلیشن شپ کو نرچر کر سکتے ہیں, ایکٹیویٹیز پلان کر سکتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ ہو سکتی ہیں. یعنی دوز پیپل ہو ہیو لائکڈ یور پیج, آپ ان لوگوں کو لکی ڈرا میں پارٹیسپیٹ کرا لیں تو آپ ان کے ساتھ ایک انٹریکٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ انگیجمنٹ کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. سو کسٹمرز ول فیل مور کنیکٹڈ. آپ کے پاس ایک فنل کے اندر فلٹر آؤٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں کسٹمرز جیسے جیسے ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. پھر آپ کے پاس نیکسٹ اسٹیج کے اوپر کنورٹڈ کسٹمرز آ جاتے ہیں جو کہ پہلے صرف برانڈ کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے, اب شاید وہ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں. جب پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کراس سیل کرنے کی بھی اور اپ سیل کرنے کی بھی. اپ سیل کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے آپ اسی کیٹیگری کا اپر پروڈکٹ ان کو سیل کر سکتے ہیں. اف somebody is buying a software license with 1 year warranty تو آپ اس کو آفر کر سکتے ہیں کہ 3 years لے لو اور اس پہ ہم آپ کو 25% ڈسکاؤنٹ دے دیں گے. سو دیٹ از اپ سیلنگ. اور کراس سیلنگ یہ ہے کہ کوئی ایک ڈفرینٹ پروڈکٹ جو ہے ان کو سیل کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے آپ کے پاس کسٹمرز نیچے فنل ماڈل میں کم ہوتے چلے جاتے ہیں. پہلے انٹرسٹ زیادہ ہے اور نیچے آتے آتے کسٹمرز جو آپ کے رہ گئے ہیں یا جو کنورٹ ہو گئے ہیں کسٹمرز وہ کم ہیں. سو ہمارے پاس جو کور ایکٹیویٹیز ہیں ریلیٹڈ ٹو سوشل میڈیا, اس میں وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی آور آڈینسز, اچیو آؤٹ ریچ کیسے کرنی ہے, اور پھر کمیونیکیشن اسٹریٹجی کیا بنانی ہے, اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. سو یوزنگ دا فنل ماڈل ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایکوائر کیسے کرنا ہے کسٹمرز کو, اس کی اسٹریٹجی کیا ہے. کچھ کور ایکٹیویٹیز جو اس سے ریلیٹ کرتی ہیں with reference to using social media, we need to identify priority audiences and segments, how to achieve outreach, and review communications strategy. Let's just summarize. ہم نے آج بات کی ہے with reference to social media strategy. We need to listen to the customers, اور ہمیں customers کو اپنے دیکھتے ہوئے انٹریکشن کو اور انگیجمنٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے آبجیکٹیو سیٹ کرنے ہیں. We have talked about 5 S's جو کہ گولز میں ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں. We have talked about the race framework as well, and we have talked about POST as well. Race and POST جو دونوں acronyms ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. Then we have talked about approaches to acquire new customers and customer services اور sales increase کرنے کے لیے بھی گولز ہمارے پاس ہو سکتے ہیں. اپنی ڈسکشن نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. I will see you again. اللہ حافظ.